I will tell you the harsh reality of the college that nobody tells you. कॉलेज जाने से पहले हम लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि कॉलेज ऐसा होगा वैसा होगा. Hi, I'm second year student. Before entering in the college, I was thinking कि कॉलेज में बहुत सारे टॉपर्स होंगे, वो क्रिएटिव चीज़ें कर रहे होंगे, साइड हसल कर रहे होंगे, कंटेंट क्रिएशन कर रहे होंगे, बहुत कुछ सीख रहे होंगे, स्किल्स डेवलप कर रहे होंगे. बट when reality hit me, I observe everyone is stuck in scrolling. A few people are creative and बहुत कम लोग हैं जो स्किल्स डेवलपमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट को लेके सीरियस हैं. Let me tell you, the greatest thing in the college is freedom, and the worstest thing is also freedom. But freedom without discipline is a trap. You can do everything in the college. You have a lot of freedom. ये तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बन सकती है, तुम्हारी वीकनेस भी बन सकती है. अगर तुम्हारा रूटीन फिक्स्ड नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा टाइम कहाँ स्पेंड हो रहा है. So journal yourself, write down your plans, your today plan, your weekly plan, your monthly plan, and 99% of the people don't write. So you have to write. And पूरे दिन में एटलीस्ट एक प्रोडक्टिव चीज़ होनी चाहिए, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, एडिटिंग हो, न्यू लैंग्वेज सीख रहे हो. एटलीस्ट एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी तुम्हारे रूटीन में होनी चाहिए जो तुम्हारे लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल. सो यू हैव टू राइट डाउन योर प्लान्स. नो वन विल कम टू मेक योर प्लान्स. Nobody will come to save you. When you were in school, you were with your parents and they saved you from every problem. And even coaching में भी एक specific environment होता है and teacher guides you, teacher encourages you. And when I was preparing, teachers encouraged me a lot, inspired me. But here in the college, no one will come to save you. Nobody cares you are studying or not. तुम scroll कर रहे हो, तुम creative चीजें कर रहे हो, नहीं कर रहे हो. Nobody cares. That's completely on your own. So be careful, be curious, and be conscious about what are you doing throughout the day and how much productive things are you doing in the day. You should choose friend wisely. Have you noticed कॉलेज में हर टाइप के लोग होते हैं. कुछ लोग बहुत हसल कर रहे होते हैं, कुछ लोग जस्ट scrolling. You have to make sure whom do you spend most of the time with. जरूरी नहीं तुम्हारा जितना बड़ा सर्कल होगा उतनी लाइफ अच्छी होगी. It's not about having a big circle. Just choose your own people who listen you, who uplifts you. That's it. Build outside the college. Build a side hustle. As I told you, do at least one productive thing in a day. You have to make something. You have to build something in you. सिर्फ कॉलेज से कुछ नहीं होने वाला है. And I observed it. सिर्फ कॉलेज से कुछ नहीं होगा. At least spend 1 hour on your skills every single day. Let me give you an example which skills I'm developing nowadays. So I'm learning English speaking every day. I practiced every day 1 hour and I read books to expand my knowledge every day. I journal myself and content creation. So build a side hustle. Thanks for watching.